Okay, the question number 3, part A. Complete the table for y is equal to x cube over 2 minus 3x minus 1. Topic of this question number 3 is graphs of functions and its application. It is common practice the table with the corresponding values of x and y is given. Almost all the values of x and y, they are filled within the table. In some cases all the values are given. Mostly one or two values of y will be missing. Here you can see in this table only one value of y is missing. If you see first column, you have to find the value of y for the given value of x. So in part A, it is required to find the corresponding value of y for x is equal to minus 3. So x is equal to minus 3 is given. Equation is given. It is required to find the value of y. We will substitute the value of x is equal to minus 3 in the equation to find the corresponding value of y. So that will become minus 3 cube over 2 minus 3 times minus 3 minus 1. So that will give us minus 27 over 2 plus 9 minus 1. Using the calculator you can find this value. This is paper 2. Minus 27 over 2 plus 9 minus 1. That gives minus 5.5. Corresponding value of y for x is equal to minus 3 is minus 5.5. 1 mark question. The B part is on the grid. Draw the graph of y is equal to x cube over 2 minus 3x minus 1 for negative 3 less than equal to x less than equal to 3. Means we have to draw the graph for the values of x from minus 3 till 3. You can see here that in the table the few values in the range of values of x minus 3 and 3 are given. Both x's are drawn. They are labeled as well. The first part to draw the graph is you will mark the given points on this given grid. 7 points are given. If you will draw 4 points correctly, you will get 1 mark. Marking all the points on the grid correctly, 2 marks can be achieved. And 1 mark will be joining those points by hand-free smooth curve. So the first point here is minus 3 and minus 5.5. The value of x is minus 3 and the corresponding value of y is minus 5.5. On the y-axis, there are 5 small divisions, minus 5 till minus 6. Each division is for 0.2. So this will be minus 5.2, minus 5.4, minus 5.6. So between minus 5.4 and minus 5.6 there will be minus 5.5. So y-axis पे minus 5.5, whereas आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से हम y-axis से minus 5.5 से हम इधर जा रहे हैं. ये माइनस 5.5 की वैल्यू वहाँ से हो गई. और अगर आप देखें तो ये दिस इज जस्ट बिलो माइनस 3, एग्जैक्टली बिलो माइनस 3. माइनस 3 हमारे पास ये वाला पॉइंट था, हमारे पास ये वाला पॉइंट. तो इसको भी मैं आपको लाइन ड्रॉ करके, डॉटेड लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ. So this is the first point. This represent minus 3 and minus 5.5. The same way, the second point is minus 2, 1. So minus 2, here you can see minus 2, 1. So here you can see all 7 points are marked. One, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So you have to join all these points by freehand smooth curve.
आपके पास कर्व बन गई। So this is the curve. ये हमारे पास स्मूथ कर्व आ गया। No ruler will be used even if you will draw any single portion of the graph by using a ruler. You will lose this mark. 1 mark for joining all these points by a freehand smooth curve, and 2 marks for marking these points in this case. C part is use your graph to explain why x cubed minus 6x minus 2 is equal to 6 has only one solution. अच्छा, इसमें यहाँ एक बात आपको समझनी होगी। यहाँ पे जो चीज़ आपने कंसीडर करनी है, यूज योर ग्राफ। सो इट मीन्स ग्राफ जो ऑलरेडी ड्रॉन है, वी हैव टू यूज दैट ग्राफ। तो ये यूज योर ग्राफ एक पहला हमारा पॉइंट है। दूसरी बात ये कि सॉल्यूशन, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज हाउ डू वी सॉल्व अ गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग अ ग्राफ। तो सबसे पहली बात ये होती है कि वी मेक श्योर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। So we have drawn the graph of y is equal to x cube over 2 minus 3x minus 1. So we have to rearrange the given equation in such a way that on the left side we must have the expression x cube over 2 minus 3x minus 1. So on the left hand side there should be, we have drawn the graph of y is equal to x cube over 2 minus 3x minus 1. So we will rearrange this equation in such a way that on the left side we must have this expression x cube over 2 minus 3x minus 1. तो जिस चीज़ का ग्राफ हमने ऑलरेडी, जिस ग्राफ को हमने यूज़ करना है, यूज़ योर ग्राफ, तो ये जो यूज़ योर ग्राफ वाला हमारे पास है, दैट इक्वेशन जिसका हमने ग्राफ, उसका ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, दैट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड। हमने इसको रीअरेंज करना है। वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नंबर। सो वी कैन डिवाइड द लेफ्ट साइड बाय 2, तो ये आपके पास हो जाएगा x3 minus 6x minus 2 over 2. So if we have divided the left side by 2, तो हमें वही काम दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। We need to do the same to the right side of the equation. So that will make us, अगर आप इसको देखें, आपके पास आ जाता है x cube over 2 minus 6x over 2 minus 2 over 2 is equal to 3. So we have got the same expression whose graph we have already drawn, which was x cube over 2 minus 3x minus 1 is equal to 3. तो पहला स्टेप ये होता है कि अगर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय यूजिंग ग्राफ, वी शुड हैव द सेम एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हुज ग्राफ ऑलरेडी वी हैव ड्रॉन। अब आपके पास जो राइट पे बचता है, दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि आपको पता है x क्यूब ओवर 2 माइनस 3x माइनस 1 वो y है, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, इन द ग्राफ वाली बात हो रही है। एनीवेज, आपको माइंड में ये स्टेप्स रखने हैं कि पहला स्टेप ये है कि आपने रीअरेंज करना है इक्वेशन को इन सच अ वे दैट कि लेफ़्ट साइड शुड बी द सेम। लेफ़्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो वही एक्सप्रेशन हो जिसका ग्राफ हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। जो राइट पे बचेगा उसको y इज इक्वल टू 3 करके उसकी हमने लाइन ड्रॉ करनी है। जब आप उसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो जहाँ दोनों ग्राफ, सब देखिए हमारे पास एक तो y इज इक्वल टू 3 आ गया, हमने y किसकी जगह पे लिखा, दैट इज y इज इक्वल टू x3 over 2 minus 3x minus 1। ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है, द ग्राफ ऑफ दिस हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन। अब हम y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, इन दोनों ग्राफ्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सोल्यूशन। क्योंकि देखिए ना, अब ये आपके पास इक्वेशन वही बन जाती है। अगर आप y की जगह पे 3 पुट कर दें और ये बैकवर्ड अगर आप जाएंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 2 माइनस 3x माइनस 1, इन दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी सोल्यूशन ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये वही इक्वेशन है। अगर हम y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 2 माइनस 3x माइनस 1 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो वी विल end up with the equation x cube minus 6x minus 2 is equal to 6. अब हम जाते हैं ग्राफ पे। अब ये ग्राफ किसका है? This is graph of y is equal to x cube over 2 minus 3x और minus 1। और दूसरा ग्राफ हमने कौन सा ड्रॉ करना है? y is equal to 3 का। So y is equal to 3 का ग्राफ किस तरह होता है? y is equal to 3 का ग्राफ is a horizontal graph which passes through the 3 of the y-axis. y is equal to 3 horizontal line होगी. All the points on that graph will have the value of y is equal to 3. Basically ये एक horizontal line है जो कि y is equal to 3 में से पास करेगी। तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से लेके ये जी हमारे पास लाइन बन गई। किसकी लाइन है? दिस इज y is equal to 3. So there is one point of intersection. One point of intersection means there will be one solution. So there will be one solution. There is one point of intersection. ये एक ही point of intersection, ये वाला point of intersection है उसका। So this shows ओनली, ये आपको शो करना पड़ेगा ग्राफ के ऊपर। y is equal to 3 की लाइन बनानी पड़ेगी और फिर आप वहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए ना, यहाँ पे आपके पास ये रीज़न, ये आपने थोड़ा सा कोशिश किया कीजिए कि स्पेस में पूरा, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं एक्स्ट्रा स्टेप्स कर रहा हूँ। तो ये एक ही स्टेप में हो सकता है कि सिंपली यू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो आपके पास एक्स क्यूब ओवर 2 माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 जाएगा। ये तो मैं आपको शो कर रहा हूँ, आपको आप डायरेक्टली ये चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप ये चीज़ आपको लिख सकते हो। तो एक स्टेप की बात है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ये इक्वेशन बनाओगे डायरेक्ट वन स्टेप में, फिर आप लिख दोगे कि y इज इक्वल टू 3 एंड ग्राफ, ये आपने यहाँ रीज़न लिखनी है, एक्सप्लेन करना है ना। ग्राफ हैज़ वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज सीन इन द ग्राफ, एज सीन ऑन द ग्राफ, उसके ऊपर लिख के आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेट्स कि लाइन L passes through the point 1 1 and minus 2 minus 1 on the grid, draw the line L। अब एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है। देखिए पहले पार्ट में वो लाइन ड्रॉ करने को कह रहा है, टू ड्रॉ अ ग्राफ वी नीड some points on the graph. अगर कर्व हो तो we need 5 6 7 8 9 points depending how much complex the diagram would be. We are talking about the line L passes. तो straight line की बात हो रही है। L, to draw a straight line only 2 points are needed, 2 points are required. तो उसने वो 1 1 और -2 -1 आपको दे दिए। We will locate the 2 points. एक पॉइंट तो हमारे पास 1 1 हो गया, ये x का 1 हो गया, यहाँ पे इधर जाएगा और 1 का y इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बन रहेगा। ये देखिए ये आपका पॉइंट है, ये वाला, ये आपके पास पॉइंट हो गया 1 1। देखिए यहाँ से 1 है और यहाँ से भी 1 आपके पास आ गया। एक तो पॉइंट हमारे पास 1 1 हो गया, अदर पॉइंट वाज दैट वाज -2 -1। तो -2 -1 है, तो ये देखिए -2, यहाँ से अगर -2 से हम नीचे आए, क्योंकि नेगेटिव y नेगेटिव है तो नीचे होगा, तो ये आपके पास जा रहा है और यहाँ पे -2 हो गया। तो सेकंड पॉइंट आपके पास ये वाला हो गया, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, दैट इज -2 -1। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन नीड 2 पॉइंट्स, जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स बाय a straight line, that will be the line L. Now you can extend this line. इस लाइन को आपने सिर्फ यहीं तक नहीं रखना, you have to extend this line. To draw a straight line, always use ruler. And to draw a curve, never ever use ruler. Freehand, smooth curve. You know, this is line L. ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज L। ये जनाब इसको लेबल कर दें बेशक, ये आपके पास
L है लाइन, ये वाली लाइन L है। पार्ट 1 वाज ऑन द ग्रिड ड्रॉ लाइन L, तो हमने ड्रॉ कभी लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट D2, second part is work out the gradient of line L. 2 points are given. We need 2 points to find the gradient. तो gradient क्या होता है? y2 minus y1 over x2 minus x1. So अगर मैं इसको x1 और y1 I take from first point और ये x2 y2 सेकेंड से मैं ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? y2 is -1 और -1, y1 is 1 over x2 is -2 and minus x1, तो -1 आ जाएगा, तो that will be -2 over -3, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 over 3 is the answer. अब उसने कहा find the x coordinates of the point where line L intersects the curve. अब देखें on the graph L की लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी और y is equal to x cube over 2 minus 3x minus 1, तो सबसे पहले हमने ये ड्रॉ किया था। इन दोनों ग्राफ्स के जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे वहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ लिखनी है। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली यू हैव टू ऑब्जर्व वेयर द टू ग्राफ्स इंटरसेक्ट and you have to pick the values of x from those point of intersections and write here in the answer space. So here on the graph 3 points of intersections can be clearly seen. एक तो आपके पास ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, दूसरा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और तीसरा यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पे एक हमारे पास ये आ गया पॉइंट, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ये हो गया, तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ये हो गया। So simply you have to pick the values of x from these points. देखिए पहले वाले पॉइंट में अगर मैं इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर देता हूँ, you can see here, तो ये हमारे पास आ गया जनाब। ये क्या होगा हमारे पास? -1 -2. You can see here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deviations between, there are 10 small deviations between -1 and -2, same way 0 to -1. Along x-axis 1 small deviation is 0.1, so that will be -2.1 2 3 4 -2.48. it looks like that. ये हमारे पास पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, -2.48. It could be 2.49, 2.47, 2.5 even will be acceptable. The second answer will be, this is 1 2 3, I think -0.38, नॉट 38, थोड़ा सा पहले है मेरे ख्याल, 37 कर लेते हैं इसको, 37. So -0.37 is the second value. Again it could be -0.36 or 38. And the third one is, that will be the third point of intersection, line and graph का, that would be 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, this is 2.8 2.93 to 2.8 5 6 7 8 7, 2.9 भी हम कह सकते हैं, 2.87. The third answer will be 2.87.